as soon as possible. The news coming from the center was Prestige 11 Salset winning the toss and deciding to field first, thus inviting the batters of Rajaram Warriors, Vengula Taluka. A change can be seen in the side of Rajaram Warriors, Vengula Taluka. Babal Naika, man from Odauda, will be back in the action. He was missing the match number 1 and he is joining his team with respect to the match number 2. This is a crucial match. It is a situation where if you want to stay in the tournament, you have to win. If you are not, you are out. This is the statement going from the commentary box. Extra player of Prestige 11 Salset, you have been requested to kindly join us in the commentary box. Two officials out there in the middle. The main screen umpire, we can see Siddesh Harmalkar, man from Pernem, and the square leg umpire Rajesh Signapurkar, man from Mapsa. In the scoring department, we have a scorer Vishnu Narvekar, who is handling the scorebook. The batsman onto the strikers end, man from Tulzapur, Krishna Gauri, and onto the non-strikers end, man from Vodauda, Babal Nev can be seen. And in the bowling department, Gurushan is going to start the bowling attack. The first power play over. Pitching up down to that offer side, a beautiful lofted cover drive can be seen. A good start this is from the end of Krishna Gauri. Down to that offer side, a beautiful lofted cover drive and the result, a boundary. DJ. Back first ball down to that offer side, a full length delivery was the mistake. This time up in the sky should be taken. Wicket keeper under it. Catching and gathering can be seen behind the wicket. Krishna Gauri on the first ball, a lofted cover drive. On the next, wanted to clear the mid wicket in the form of that big heave. A heighted shot, not the distance, getting part of the blade. And the overseas batter needs to go back into the dugout. DJ. Overs in the straight region were fantastic to be watched on from this commentary box. He will be joining Babal Naik onto the strikers and Gopala Bhatta. And he will be coming with a mindset. One of my openers has been already going back into the dugout. And it is time for me to play a beautiful knock over here. My team has been requiring such kind of a great knock from my bat. With this kind of mindset, Gopala Bhatta on the striker head will be batting. We can see two fielders are being allowed outside the 30-yard circle in the form of the deeper extra cover. We can see one fielder and a deeper mid-wicket. These are the two fielders that have been placed outside the 30-yard circle. Down to that offer side, a nice carry was been seen into the hands of wicketkeeper umpire Siddesh Harmalkar has been coming on a screen and saying that yes, it's an wide. Extras have been taken care of. A penalization has been coming off for the bowler in the form of an extra. And with that extra, 5 runs can be seen on the scorecard. Over number 1 from the end of Gurushan is in progress. Once again, a full length delivery. Wanted to drive it across the covers. Not that much momentum. As soon as the fielder from the cover will be coming on a screen, Dinesh was the man onto that occasion, collecting the ball off. Another single runs will be definitely taken. And with that single, Babal Naik will be on the striker's end. And the entire tally of the scorecard is been going to 6 runs with the dismissal of 1 wicket. First ball, Babal Naik has been facing off, glancing it across the cow corner. Not that much timing, but still he will be getting 4 more runs in his tally. What a shot
Not that much timing onto that occasion, but the direction, if you generally see, in which he's been playing, there was no deeper protection. And because of that, 4 more runs will be added on the scorecard with that 10 runs can be seen. A good start, I will say, from the end of the batters, both Gopal Bhatta and the left-handed batter, Babal Naik. Beautiful delivery. Once the delivery was been pitching into that full and it is deviating away for a left-handed batter. A nice carry was been seen into the hands of the wicketkeeper. And this is the reflection that Gurushan has been showing. Why I've been known as one of the strongest bowler when it is said to be the history of Goa tennis cricket. This is the reflection. This is the strand he's been showing. Cross-batted shot. That is going out of the park. That's been humongous. 6. If you generally see the shot that was been played on the last ball, what a shot that was from the end of Babal Naik. A monstrous biggie. To bowl the first over from his quota and the second over from his side. From the side of team, we can see Sohail Sheikh, man from Kudal, in the form of an overseas for the team bowling. If you generally once again have a look for right-handed batter, we can see that deeper extra cover and cow corner are been placed in the form of the 2 fielders allowed outside the 30-yard circle. Since it is a power play over, on the back foot, wanted to cut it fine. He was watching, there was a huge gap between backward point and the cover fielder. Wanted to bisect it was the idea. But the pace from the end of Sohail Sheikh was been brilliant. A nice carry can be seen into the hands of the wicketkeeper and the result is a dot. Sohail Sheikh from his end will be thinking that yes, the first over has been leaking too many runs out there in the middle. It is time for me to put some barrier. Once again, this time he finds it just on the right side of the cover point. The ball has been racing away into that deeper backward point fences and that's been going for an rolling boundary. With respect to that 4 runs, 20 runs can be seen on the scorecard with the dismissal of 1. Gopal Bhatta onto the striker's end. Once again, similar kind of line, similar kind of length was being offered, wanted to play same kind of a shot, but the pace was being really higher as compared to the expectation from the batter. Once the ball was being pitched, it is really getting an extra bounce and a nice carry can be seen into the hands of the wicketkeeper. A comeback delivery from the bowler end. Front of the wicket, once again a bite sector, mid-off and mid-on will be just looking the ball go. Once again the ball has been sailing into that straight region and another boundary coming from the bat of Gopal Bhatta. 4 more runs will be added and with that 24 runs can be seen on the scorecard. DJ. Sohail Sheikh continues. Reverse attempted was a good idea because he was knowing the factor that yes, once the bowler has been bowling me a fuller length delivery, this time he will just keep the length in the form of that shorter length. And the idea was to play a reverse, missing it completely. Once again, a dot delivery from the end of Sohail Sheikh. Width along the carpet, the driven shot can be seen. A deeper extra cover comes on a screen, collects the ball off. Another single runs will be definitely taken. And with respect to that single, 25 runs after completing 2 overs with the dismissal of 1 wicket is the scorecard telling. Thank you. TJ.
Timer to give the ball towards one of the army who can remove this wicket, who can break the partnership between Gopal Bhatta and Babal Naika. Gurushan once again will be bowling his second over from his quota and the third over for his team. Fields have been spread everywhere. Full toss delivery. As I said, but finally on the first chance, second chance, third chance, the catch has been dropped up. It is always said, in order to win matches, you have to take catches. It is a situation where if you want to stay in the tournament, you have to win this. A catch has been dropped across that point region. Single more runs will be added on the quota with respect to that single. 26 runs. Babal Naik will be coming onto the striker's end. A lot of field changes as soon as Babal Naik comes. There is a deeper backward point kept onto that occasion for protecting that reverse. There is a deeper extra cover, a long on, long off, deeper mid wicket and cow corner. Once again, Vital on the carpet. The ball has been driven. Deeper extra cover comes on a screen, collects the ball off. Another single runs will be definitely added. With respect to that single, Babal has been telling us that cricket is not a game of big hitting. It is also about the singles and doubles that you show. That has been reflected from the end of Babal. Single more adds in a favor with respect to that single. 27 run on the scorecard. Full land delivery down to that offer side, just falling short of the fielder. Nothing damaged, just a single with respect to that single. Slowly and steadily, score has been kept on rotating. Score has been moving to 28. We are in the over number 3. Another 5 overs to come after this. Lot of hard work needs to be done from the end of batters to get a good par score. I would say at least a 90 to 100 should be manageable. Cross-batted shot. Once again, Babal Naik is coming on a screen. A good shot into that deeper mid-wicket fences. And this time, it's ginormous. 6. The scorecard with the dismissal of 1. Second shot in the form of a 6 from the bat of Babal. And he is getting some confidence out there in the middle. This time a covering has been coming off from the end of Gurushan. Good piece of work from that mid-off fielder. Definitely saved a boundary, I will say, for the team. Single more runs will be taken on the scorecard. And with respect to that single, 35 runs on the scorecard. Third over is in progress. Gurushan bowling is second. A good partnership has been seen discovering between both the batters, Babal and Gopal Bhatta. Once again, taken in the form of that lower full toss, played across that cover point region. What a shot from the end of Gopal Bhatta. Usually we can see in the form of leather ball cricket, such kind of shots are being struck, and it is this time from the bat of Gopal Bhatta, boundary. Nine runs on the scoreboard. The partnership between Gopal Bhatta and Babal Naik of 35 runs. I always say cricket is not a game of individual person. It is about the teamwork. It is about the partnership role that you show. Meanwhile, in order to bowl his second off from his quota and the fourth over for his team, Sohail Sheikh, man from Kuda, in the form of an overseas for the team of Prestige 11 Salsed, will be back in the action. Sohail Sheikh, if you generally have the summary of the first over that he's been bowling, considered 9 runs without any wicket. Gopal Bhatta and Babal Naik onto the striker's end. Meanwhile, what a shot in the long on. It's a biggie, 6.
that you already saw in the ceremony that was been held between down to that offer side. Once again, cover drive has been coming into the picture. Deepa extra cover comes on a screen and collects the ball of another single. They had fireworks from the end of Dream Deco, that is from the end of Tritesh Parab. Dream Deco. It was beautifully done. You can see first three single shots going on and suddenly that a cracker. So that is what the love and passion of this entire committee of Betkar United. Now to the opposite, beautifully done. What a shot from the bat of Gopal Bhatta, just using the pace of the bowler, and that has been struck across that backward point fences, and once again it is a boundary signal coming off from the umpire. You can watch the replay on the main screen. Down to that offer side and see the back foot just going towards the ball and how it was been struck across the deeper backward point fences from the bat of experienced captain of Sindhudurg, Gopal Bhatta. 50 up for the team batting, 50 with the dismissal of 1. Congratulations for the half century. Meanwhile, what a shot this time above the head of the mid-off fielder, and Gopal Bhatta has been telling us that age is just a number. The amount of shots that he's been playing is really fantastic to be watched on from this commentary box. And in the previous ball, it was a terrific above the height of that mid-off fielder into that long-off region for a beautiful boundary. 54 on the scorecard. Once again, a reverse has been attempted, a fall shot from the end of Gopal Bhatta because he's been playing with the natural shot. Whenever I see such kind of shot, it always reminds me of this man Gopal Bhatta playing such kind of lofted cover drives, backward square cut. What a shot out of nowhere, that is landing on the moon. That's a colossal, biggest, monstrous, bigger 6. On from here, after completing 4 overs, it is 60 runs on the scorecard. Gopal Bhatta playing on 30 of his individual with respect to the 14 deliveries he's been facing. Babal Naik playing on 25 of his individual with a courtesy of 8 deliveries that he's been facing. The partnership between both the batters is 56. Can both this batter continue and play that 4 overs and put a decent target of 120? Or can the bowling attack from Shrutesh 11 from the end of Prestige 11 Salced come and say that we are going to restrict them within 90 to 100? Over to commentary box, a change in the voice. Ashok Sarnaik all the way from Shiroda with respect to his radio commentary. थैंक यू, धन्यवाद अक्षय। गेंदबाजी में परिवर्तन कमेंट्री बॉक्स की ओर से और मौका मिल चुका है स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। टोटल स्कोर 61 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सामने गोपाल भट्टा स्ट्राइक पर सामना करते हुए। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, इस बार उतना अच्छा टाइमिंग नहीं हुआ। शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 5वें ओवर की शुरुआत वरद दाभोलकर जो फिरकी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। सामने भी एक बहुत ही अच्छा फिरकी गेंदबाज है ग्लेन फर्नांडिस और स्ट्राइक पर बल्लेबाज है बबल नाइक सामना करते हुए। छोटे गेंद इस बार पोल किया मिड विकेट बाउंड्री पर, डीप मिड विकेट बाउंड्री पर गेंद सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। नाइक उर्फ बबल स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करते हुए और वरद दाभोलकर अपने बॉलिंग मार्ग पर।
अल्टी पल्टी वाला शॉट, इस बार गेंद निकलती हुई थर्ड मैन बाउंड्री पर, बाउंड्री लाइन को पार करती हुई गेंद 4 रन के लिए। बबल नाइक 36 पर, गोपाल भट्टा बल्लेबाजी कर रहे 31 पर। शुरू का पहला विकेट बहुत जल्द खोया था राजाराम वॉरियर तड़वड़े वेंगुर्ले क्रिकेट टीम ने। इस बार फिर से घूमकर मारा ऑन साइड पर, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर है मौजूद। दोनों ओर से जो कि अब मात्र आक्रामक बल्लेबाजी, एक ओर से गोपाल भट्टा, सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज विठल उर्फ बबल नाइक और वरद दाबोलकर आते हुए धीरे धीरे अपने बॉलिंग बार पर कमेंट्री बॉक्स की ओर से। खेल जारी है 5वें ओवर का और स्कोर है 73, 73 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। पटकी हुई गेंद, इस बार कंधों का ज्यादा इस्तेमाल किया, रन के लिए आगे निकले थे नॉन स्ट्राइक करंट से बबल नाइक, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का और एक अतिरिक्त सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। काफी दर्शकों की भारी संख्या में तादाद इस मैदान पर, पर्व दूसरा, आज पहला दिन और लाइव प्रसारण के साथ tenniscricket.in से भी काफी दर्शक जुड़ चुके हैं। वरद दाबोलकर अब ओवर द विकेट, सामने बल्लेबाज है गोपाल भट्टा। ओ, इस बार शॉर्ट आर्म पोल, गेंद खड़ी हो गई लॉन्ग ऑन पर, फील्डर, ओहो, शायद गोपाल भट्टा को अब और एक मौका मिला। ये बिल्कुल आसान मौका था लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, बड़ी देर तक गेंद हवा में थी और दोनों को मौका दे चुके बल्लेबाजी की अगर बात की जाए तो। एक ओर से विठल उर्फ बबल नाइक, सामने गोपाल भट्टा, फिलहाल एक सिंगल और स्कोर रुका हुआ 75 रन टोटल, 1 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 15 रन के साथ रन बनाते हुए राजाराम वॉरियर्स तड़वड़े वेंगुर्ले क्रिकेट टीम सामने टॉस जीता और टॉस जीतकर बल्लेबाजी को मौका दिया राजाराम वॉरियर्स तड़वड़े क्रिकेट टीम को। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया प्रेस्टीज 11 सालसेट क्रिकेट टीम ने। क्या बाउंड्री लाइन को देखो खूबसूरत सजाया है, पहली बार जो कि इस खूबसूरत जो कि एलईडी जो कि पूरी बाउंड्री लाइन को जो कि आपको दिखाई देती हुई। सामने गेंदबाजी में परिवर्तन, गेंदबाजी में अनूप माजलकर, मैन फ्रॉम कारवार। इस बार थोड़ी सी हवा में गेंद कवर पॉइंट पर, नो मैच लैंड में डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर, फील्डर दूर है और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए। गेंदबाजी में परिवर्तन, अनूप मांजलेकर। थैंक यू डीजे। आज पहला दिन एक अर्धशतक जरूर देखने को मिला है एजाज कुरैशी का। आगे निकल कर इनको ड्राइव किया, इस बार ऑफसाइड पर, वाइड लॉन्ग बाउंड्री पर और गेंद निकलते हुए बाउंड्री लाइन पर, फील्डर दूर था, 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। बेहतरीन बल्लेबाजी गोपाल भट्टा की, स्कोर आगे बढ़ा 83 रनों पर। सामने गोपाल भट्टा खुद के व्यक्तिगत 40 पर, विठल उर्फ बबल नाइक बल्लेबाजी करते हुए 37 पर और बॉलिंग बार पर अनूप अगली गेंद लेकर। इस बार ऑन साइड पर स्लॉग से बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर एक नजाकत भरा चक्का गोपाल भट्टा के बल्ले से।
चारी डेकोरेटर्स बहुत ही शानदार साउंड सिस्टम और स्विचेट गोपाल भट्टा आज के पहले दिन का दूसरा अर्धशतक। जोरदार तालियां गोपाल भट्टा के लिए, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी। पचास रन, क्या बल्लेबाजी। जब टीम संकट में थी वहीं से लेकर अपने टीम को संभाला। एक बड़ी साझेदारी बनती हुई मैदान पर इन दो बल्लेबाजों के बीच में। ड्राइव किया इस बार आगे निकलकर, बहुत ही अच्छा शानदार कवर ड्राइव, डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर आते गेंद को उठाते, दूसरा रन के लिए थोड़ा सा पलटे थे, हाना हाना कर रहे थे, लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल से रनआउट का विकेट टीम के ऊपर निश्चित रूप से संकट बन सकता है, क्योंकि नए बल्लेबाज को थोड़ा दबाव रहेगा आते आते बड़े शॉट लगाने के लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 96, लॉस ऑफ 1 विकेट, 96 रन 1 विकेट पर। अब एक बार फिर से सामने स्ट्राइक पर विठल और बबल नाइक और उनके लिए अनूप मांजलीकर, जो राउंड विकेट अपने बॉलिंग मार पर। और पिच गेंद इस बार खेला गेंद को ऑफसाइड पर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर सीधे फील्डर के हाथों में, दूसरा विकेट चला गया। गुरशन चिकलगी लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे, लेकिन अपना काम इस मैच के साथ जरूर पूरा किया बबल नाइक ने। शानदार बल्लेबाजी, 96, लॉस ऑफ 2 विकेट। डीजे शपोलोकर खेला इस बार, लेकिन उतना अच्छा टाइमिंग नहीं। थर्ड मैन बाउंड्री पर गेंद चली गई, बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 22 का इशारा। रन किसी भी तरह से बने बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं मैच में, और 4 रन का इशारा होता हुआ 22 के साथ 4 रन जुड़ गए स्कोर के खाते में। और राजाराम वारियर तलवड़े क्रिकेट टीम के लिए जोरदार तालियां, 100 रन पूरे होते हुए। बहुत ही शानदार 7वें ओवर की शुरुआत। आज के अगर बात की जाए तो इससे पहले एक मैच से पहले एक बड़ा टोटल देखने को मिला था, जो आज के दिन का हाईएस्ट टोटल था, 129 का टोटल था। इस बार हल्के से खेला गेंद को ऑफसाइड पर, गेंद थोड़ी से हवा में कवर पॉइंट पर, हवा में बिल्कुल छलांग लगाई थी, लेकिन गेंद हाथों से लगकर गेंद निकली गली की तरफ। एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। इसी टीम के साथ सामने एक बड़ा टोटल बनाया था राजाराम वारियर तलवड़े की विंगुर्ले क्रिकेट टीम के सामने। 129 सामने टारगेट रखा था राजाराम वारियर तलवड़े क्रिकेट टीम के लिए 130 का। बहुत शानदार मुकाबला समाप्त हुआ आखिर में। अब बल्लेबाजी का मौका मिला और एक बड़े स्कोर की ओर कदम बढ़ा रही है राजाराम वारियर तलवड़े क्रिकेट टीम। फील्डिंग में परिवर्तन, सामने दाजी नाइक, गेंदबाजी में राउंड विकेट वरद दाबोलकर ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले में संपर्क नहीं हुआ और विकेट के पर आते गेंद को उठाते फील्ड करते। 7वां ओवर और स्कोर रुका हुआ 101, 2 विकेट के नुकसान पर। 54 पर गोपाल भट्टा, दाजी नाइक स्ट्राइक पर। तेज गेंद, लेकिन लाइन पर बैठ के ऑप्टम से बाहर, अंपायर ने बाएं पहला दी, वाइड बॉल का इशारा। एक अतिरिक्त सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में वाइड बॉल के साथ। बेदकर ट्रॉफी पर्व दूसरा इस प्रतियोगिता का, लेकिन क्या शानदार, पहले से भी ज्यादा बहुत ही बेहतरीन आयोजन इस टूर्नामेंट का। फुल टॉस, ये मौका कहां छोड़ेंगे दाजी नाइक।
मौका मिला और मौके पर एक बड़ा आगाज मैदान पर, गेंद चली गई 6 रन के लिए। आकाश उर्फ डंबा, आकाश रात शुरू हो चुके, अपने आप को थोड़ा सा संभालो। बैकफुट पर कट किया, गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली, लेग ब्रेक। कवर पर, एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस सिंगल के साथ 7 पर खुद के व्यक्तिगत पहुंचे दाजी नाइक, सामने गोपाल भट्टा 54 पर। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 109, 109 रन 2 विकेट के नुकसान पर। शफल होकर इस बार फिर से गेंद चली गई, लेकिन उतना अच्छा टाइमिंग नहीं हुआ। फाइन लेग पर, शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद फील्ड होती हुई। दोनों टीमों के लिए अस्तित्व की लड़ाई है, क्योंकि पहला मैच हार चुकी है। ये लगभग दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण मैच रहेगा। और अब तक की अगर बात की जाए तो एक बहुत अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। खेल और एक ओवर का, यानी 7 ओवर समाप्त हुए और 7वें ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 109, 109 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर, सामने एक अच्छा ओवर होना चाहिए। 1-2 और विकेट मिले तो शायद कम स्कोर में थोड़ा सा सीमित करेगी, लेकिन गोपाल भट्टा और दाजी नाइक सोचते होंगे कि इस ओवर में कम से कम एक 12-15 रन क्यों न हो जाए, क्योंकि अच्छा विकेट है। भीम सिंह वंटामुरी ने शानदार पिच बनाया है, आउटफील्ड तेज है और थोड़ी सी हवा भी शुरू हो चुके हैं जो कि मैदान में। सामने गेंदबाजी में परिवर्तन, गेंदबाजी में परिवर्तन। एंजेलो फर्नांडिस आ चुके हैं सामने बॉलिंग बार पर। ऑन साइड पर फ्लाइटेड गेंद, इस बार लेग ब्रेक गेंद, बल्ले का भीतरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, दाजी नाइक आउट होकर वापस। तीसरा विकेट चला गया टीम का। स्कोर रुका हुआ 109 रन 3 विकेट पर। टेंडर बल्लेबाज है पीटर फर्नांडिस। सामने एक सफलता दिलाते हुए एक अच्छा कैच पकड़ा विकेट कीपर ने, मतीन खान ने। दाजी नाइक आउट होकर वापस एक बड़ा शॉट लगाकर खुद के व्यक्तिगत 7 पर। सामने गोपाल भट्टा 54 पर। अंतिम ओवर का खेल जारी है और दूर वाले छोर से एंजेलो फर्नांडिस अपने बॉलिंग मार्ग पर। सामने बल्लेबाज है पीटर स्ट्राइक पर। और इस बार पुल किया गेंद को ऑन साइड पर, गेंद हवा में, मिड विकेट पर, फील्डर है मौजूद। स्क्वायर लेग पर लगभग गेंद खड़ी हो गई, उतनी ताकत नहीं लगी और विक्रम गेंद के नीचे आते कैच को पकड़ते हुए और एक सफलता इसी के साथ मिलती हुई टीम को। डीजे नए बल्लेबाज और एक आते हुए मैदान पर। हैट्रिक की गेंद, ऑन हैट्रिक। ओ, मौका आ चुका है। टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक। आज 2 अर्धशतक जरूर देखने को मिले, लेकिन स्लॉग ओवर में राजाराम वॉरियर तलवड़े क्रिकेट टीम सामने बिल्कुल टीम हैट्रिक मुकम्मल करते हुए गेंदबाज एंजेलो फर्नांडिस।
होती है, लेकिन मैं कहूंगा जब विकेट कीपर हैट्रिक मुकम्मल करते हैं तो वो भी बिल्कुल अर्धशतक से कोई कम नहीं होता। नए बल्लेबाज इस बार गेंद के आने का इंतजार किया, फिर से एक बार गेंद हवा में बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, लेकिन फील्डर दूर है। एक रन के लिए लेग ब्रेक गेंद थी, प्लाइटेड गेंद थी। इस बार अक्षय गाटवल स्टार अक्षय आ चुके, खाता खोला और बड़ी देर के बाद एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। 110 110 रन टोटल, 3 विकेट के नुकसान पर। एक बार स्ट्राइक पर आते हुए गोपाल भट्टा जो सामना करेंगे। आज 2 अर्धशतक एजाज कुरैशी, उनके बाद गोपाल भट्टा और पहली हैट्रिक देखने को मिली जो सामने एंजेलो की गेंदबाजी में। फिर से एक बार सिंगल मिलेगा, मिड ऑफ पर फील्डर है मौजूद, गेंद को फील्ड करते और 1 रन। लास्ट बॉल टू गो। क्या एक बड़ा शॉट होगा आखिरी गेंद पर? नहीं तो एक बिल्कुल एक अच्छा ओवर होगा ये। शॉट ऑफ लेन गेंद ऑफ स्टंप पर, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। हमारे स्कोरर के साथ चर्चा होगी, इस ओवर में रन दिए सिर्फ 2। तालियां तो होनी चाहिए एंजेलो फर्नांडिस के लिए, बहुत अच्छा ओवर, आखिरी ओवर जिस ओवर में 12-15 रन होने चाहिए थे वहीं पर थोड़ा मैं कहूंगा पीछे हो गई राजाराम वॉरियर तलवड़े क्रिकेट टीम, और इस ओवर में हैट्रिक मुकम्मल की। टोटल स्कोर 111 और टारगेट 112 112 का। की अगर बात की जाए तो एंजेलो फर्नांडिस की हैट्रिक, 112 का टारगेट है, 8 ओवर का मैच है। दूसरी इनिंग की शुरुआत, और एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स में आइए, आवाज माइक्रोफोन पर बादल चौधरी और उन्हीं के साथ सर हरीश काकोडकर के साथ।
सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा असो खेळाडू ज्यांनी षटकारांपेक्षा चौकार खूप जास्त मारले, खास करून पॉवर प्ले भेदण्यामध्ये माहीर असणारा ह्या नावाचा. 111 धावा पहिली बॅटिंग आणि टार्गेट 112 रन्सांचा. सलामीची जोडी स्ट्रायकर एंडवर दिनेश कदम, नॉन स्ट्रायकर एंडवर सोहेल शेख आणि बॉलिंग मार्कवर विकी भोयर. मिडॉनच्या दिशेने एक सिंगल फक्त मिळतो जोपर्यंत येता फिल्डर करता फील्ड. एक सिंगल कृष्णा गवळी. दोन मोठी नावा या स्क्वॉड मध्ये समाविष्ट असतात गोपाळ भट्टाच्या नेतृत्वाखाली. विकी भोईर, धारावे नवी मुंबई, कृष्णा गवळी तुळजापूर, सोहेल स्ट्रायकर एंडवर. लोअर फुल टॉस कव्हरच्या दिशेन रोलिंग रोलिंग बेतकर ट्रॉफी चौकार. सुरुवात तर खूप सुंदर. करूच्या सर 112 रन. पॉवर प्ले मध्ये ज्या प्रकारची फलंदाजी होतेली त्यावर या सामन्याचं गणित अवलंबून 9 खेळाडू सर्कल मध्ये. यावेळी विठ्ठल म्हणजे बबल कव्हरच्या दिशेन सर्कलच्या पहिल्या आडी जाताना दिसलो. एक खेळाडू मिडॉनच्या दिशेनाचा समीर वेंगुर्लेकर. बाकी सगळे खेळाडू सर्कलच्या आत. शॉर्ट थर्ड मॅन, शॉर्ट पाईन लेग, एक मिड ऑफ, एक मिड ऑन, शॉर्ट बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग, एक फॉरवर्ड पॉइंट आणि गली. आडवी बॅट आणि मिड विकेटच्या वरसून चेंडू सीमा पार. बेतकर ट्रॉफी षटकार डायरेक्ट चंद्रा. 11 यो धावफलक, 112 धावांचा पाठलाग. राइट हँड ओव्हर द विकेट. लॉंग ऑफच्या मस्तकावरसून लांबच लांब, खूपच लांब. चेंडू सीमा पार, घासून नाही अगदी ठासून. बेतकर ट्रॉफी सिक्सर. 4 बॉलचो खेळ सरलो. रन झाले 17. ज्यावेळी सोहेल फिल्डिंग करी होतो तेव्हा त्याच्या चेहऱ्यावरचे बरेच भाव सांगान जाणारे. आखो टप्प्याचा चेंडू बाउन्स तर मिळालो. सोहेलच्या कपड्यावरसून चेंडू गोपाळ भट्टाच्या दिशेने. ही लढत विकी भोईर विरुद्ध सोहेल शेख. दोन वरिष्ठ खेळाडू, मोठा अनुभव या खेळाडूंका असा. मिनी हेलिकॉप्टर कव्हरच्या दिशेन समीर वेंगुर्लेकर चेंडूच्या मागे. सुरक्षित रक्षण, फक्त एक सिंगल या बॉलवर. पहिल्या षटकाची सांगता 112 धावांचा पाठलाग. बिनबाद 18 ही आक्रमक सुरुवात प्रेस्टिज 11 सालसेत संघ.
वैयक्तिक पहिल्या सांघिक दुसऱ्या ओव्हरीची जबाबदारी पहिल्या ओव्हरमध्ये 18 रन. विकी भोईर सारखा एक मोठा नाव, मात्र या मोठ्या नावावर प्रहार केले. 5 बॉलमध्ये 17 रन सोहेलने बनवले. 1 चौकार, 2 षटकार, 340 स्ट्राईक रेट त्याचं सध्या. सुरुवात तर सुंदर, पण ही सुरुवात अशी चालू ठेवची असतली. मॅन्डेटरी पॉवर प्लेची दुसरी ओव्हर. कट केलो चेंडू, पॉइंटच्या दिशेने प्रोटेक्शन अगदी सर्कलवर. धाव घेण्याची संधी नव्हती. गौरेश गडेकरच्या दिशेने अगदी तसाच क्षेत्ररक्षण ज्याप्रमाणे पहिल्या ओव्हरमध्ये विकीन सजवला, अगदी सेम क्षेत्ररक्षण या ओव्हरसाठी सुद्धा समीर वेंगुर्ले कडसून स्विच करण्याचा प्रयत्न. यापूर्वीच्या मॅच मध्ये सुद्धा रिव्हर्स स्वीपच्या नादात विकेट गेलेली सोहेलची, त्यानंतर सामना हातातून निसटलो. पण ज्या प्रकारे आज गोपाळ बट्टा यांनी रिव्हर्स पुल स्विच या फटक्यांचा अगदी सढळ वापर केलो. अपिश ड्राईव्ह साठी तर गोपाळ बट्टा ओळखले जातातच, पण आज बऱ्याच दिवसानंतर जुन्या फॉर्म मधले गोपाळ बट्टा बघूक मिळाले. अप्रतिम फलंदाजी, अर्धशतक त्यांच्या नावे. यावेळी समीर वेंगुर्ले करतो स्लोअर बाउन्सर अगदी योग्य टप्प्यावरसून सोहेलच्या कमी उंचीचा फायदा उठवण्यासाठी. फेअर डिलिव्हरी मैदानाच्या पंचांचो डिसिजन ते का सोहेलने चॅलेंज केला. रिव्ह्यू घेतलो पण नेमको ह्यो रिव्ह्यू सफल होण्याची शक्यता बघूया किती असा. सध्या तरी 50-50, 19-20. आपण गोपाळ बट्टा सरांबद्दल बोलवतो. एक काळ होतो गोपाळ बट्टा म्हटल्यानंतर पॉवर प्लेचो राजा. पॉवर प्लेच्या 12 बॉल मध्ये 10 सुद्धा चौकार, बऱ्याच वेळा बऱ्याच मैदानावर त्यांनी मारलेले असत. एकेका ओव्हरीमध्ये 5-5 चौकार मारणं ह्यो तर अगदी डाव्या हाताचो मळ असल्यासारखं गोपाळ बट्टान बऱ्याच वेळा ही कामगिरी केली. फेअर डिलिव्हरी डिसिजन तिसऱ्या पंचांचो सुद्धा अगदी तोच असा जो मैदानावरच्या पंचांचो. एकशे 11 धावांचा टार्गेट. पश्चिम महाराष्ट्र प्रीमियर लीग मध्ये सुद्धा या सिंधुदुर्गच्या संघाने खूप चांगली कामगिरी केली. सेमीफायनल पर्यंत हा संघ पोहोचलो करो. समीर वेंगुर्लेकर आता मात्र हळूहळू वेगावर स्वार होताना योग्य टप्प्यावर त्याका चेंडू टाकूचो ती जागा त्याका कळाली. डॉट बॉल काढण्यात यशस्वी ठरलो आणि त्यामुळे आता वेगावर स्वार. 4था बॉल डॉट सलग. सोहेल आणि समीर एकत्रित बऱ्याच वेळा क्रिकेट खेळलेत एकाच टीमसाठी. विरोधी टीमसाठी परत एकदा स्विच करण्याचा प्रयत्न. अजून एक डॉट बॉल. यापूर्वीच्या मॅच मध्ये सोहेलला त्याच्या आयुष्यातलो सगळ्यात जास्त मार पडलेलो 30 रन्सांचो त्याचं वचप जणू काय तो काढता या ओव्हर मध्ये. सलग 5वं डॉट बॉल सोहेलसाठी आणि या दुसऱ्या ओव्हरीची समाप्ती करणारा शेवटचा बॉल. बास्केटबॉल कोर्ट एंड कडसून समीर वेंगुर्लेकर. मिनी हेलिकॉप्टर चेंडू हवेत सुटलो झेल. पण झेल जरी सुटलो तरी एकदा टाळी वाजवूया समीर वेंगुर्लेकरच्या मेडन ओव्हर साठी. बेतकर ट्रॉफी 2.0 मधली पहिली मेडन ओव्हर. मोठो खेळाडू त्याला मिळालेला जीवदान आणि जीवदानाचा सोहेलला फायदा उठवतो लागतो. कारण 112 जर करूचे झाले ना तर सोहेलवरच सगळ्यांचं लक्ष. बॉलिंग मार्कवर गौरव गडेकर एक ताकदवान स्क्वेअर कटचो फटको ज्यांनी अडवलो 38 सर्कलवर. सोहेल शेखचो तो गौरव बॉलिंग मार्कवर वैयक्तिक पहिल्या सांघिक 3ऱ्या ओव्हरसाठी. समीरचा कौतुक असा यापूर्वीच्या मॅच मध्ये 30 रन खर्च केलेले समीरने एका ओव्हरीमध्ये, पण लगेच दुसऱ्या मॅच मध्ये त्यांनी वापसी केली मेडन ओव्हर टाकून. आणि यावेळी गौरव गडेकर पुलटॉस
शेवटच्या क्षणी यो बॉल थोडसं खाली इलो, मिडल तर चालू नव्हतो, मिड विकेटच्या दिशेने जोपर्यंत ग्लेन फर्नांडिस करता फील्ड तोपर्यंत एक सिंगल. रिव्ह्यू बॅटिंग साइड कडचा अजून एक रिव्ह्यू वेस्ट साइड साठी. तिसऱ्या ओव्हरीचा हे पहिलो बॉल होतो गौरव गडेकर बॉलिंग मार्कवर, आणि त्यानंतर तो बॉल होतो दिनेश साठी. ऍक्शन रिप्ले अगदी थोड्याच वेळात बघू मिळतो tenniscricket.in कडसून. तिसऱ्या पंचांचा डिसिजन नो बॉल. गौरव गडेकर पहिलो चेंडू नो बॉल. स्क्रीनवर गौरवची छबी थोडीशी टेन्स असा. फ्रीटचो बॉल असा सोहेल साठी. फ्रीटचो सोहेलला वापर करूचो लागत. 11 बॉल मध्ये त्यांनी केले 17, पण बरोच काळ ही बॅट शांत असा. या फ्रीट वरती परत बोलतली की नाही बघा. फ्रीटचो चेंडू बॅटची कट घेऊन चेंडू शरीराच्या दिशेन, जोपर्यंत गली रिजन मध्ये दाजी नाईक येता फील्ड करता. फक्त एक रन. अधिकृत पहिलो बॉल समाप्त झाला गौरव कडसून. धावसंख्या 3 ओव्हर आणि एका बॉल नंतर 21. दिनेश अजून एक फुलटॉस. वारंवार गौरव कडसून फुलटॉस असत, पण एक जमेची बाजू म्हणजे या फुलटॉसवर मोठे फटके काय इले नाही. पहिलो फुलटॉस होतो जो बीमर ठरवलो तिसऱ्या पंचाने, त्यामध्ये गती कमी होती. फ्रीटचो बॉल तर गौरवने खूप सुंदरच टाकलो. त्यानंतरचा हे बॉल परत फुलटॉस, त्याच्यावर सिंगल. रन झाले 22. करूचे असर 112. अजून एक करा बॉल. एक्स्ट्रा बॉलची व्हरायटी काय असता जणू काय गौरवने ठरवला दाखवायचा आपण सगळ्यांका. पहिलो एक बीमरचो नो बॉल, त्यानंतर फुलटॉस, त्यानंतर जो वाईड बॉल. 23 ह्यो धावफलक. 2 बॉल फक्त गौरवने टाकले, 5 रन त्यांनी खर्च केले. उडालेलो कारंजो. बबल चेंडूच्या खाली नंबर 12 ची जर्सी, आणि बबलच्या सेफ हँड्स मध्ये सोहेल शेखचो बॉल येऊन पडलो. विकेट पहिली. 23 रन्सावर 112 चा टार्गेट. नवीन फलंदाज मतीन खान. इलेल्याचा आडवी बॅट वापरण्याचा मतीनचा प्रयत्न होतो. उरलेला काम गोपाळकडे. डॉट बॉलने सुरुवात मतीनच्या इनिंगची. गौरव गडेकर 3 बॉल मध्ये त्यांनी खर्च केलेले 5 रन, पण त्यानंतर आता 4 बॉल मध्ये 5 रन आणि 1 विकेट सुद्धा. आणि विकेट किती मोठी सोहेल शेखची. ऑल इंडिया आयकॉन खेळाडू गौरवने माघारी पाठवलं यापूर्वीच्या बॉलवर. त्यानंतर जो डॉट, अजून एक फसलेलो फटको. मतीन खानचो परत एकदा बबल चेंडूच्या खाली, आणि बबल साठी जणू काही कॅचिंग प्रॅक्टिस. या ओव्हर मधली दुसरी विकेट गौरव गडेकरची. 3 ओव्हरीचा खेळ संपाक अजूनही 1 बॉल बाकी. धाव संख्या 23. 1 विकेट. 112 चा टार्गेट. अनुप माजालीकर
कारवारच्या या खेळाडून खूप प्रभावित केला. मागच्या 1-2 वर्षांमध्ये तर मोठमोठ्या अनेक स्पर्धांचा विजेतेपद या खेळाडून आपल्या टीमला मिळवून दिला. आज जबाबदारी, थोडंसं संयम आणि अनेक प्रकारचं आक्रमण गरजेचं असतं. चौफेर फलंदाजी अपेक्षित. मैदानाच्या आकाराचा जर विचार केलो 50 मीटरची बाउंड्री असा आणि त्यामुळे जर तुमचा कनेक्शन नीट असला तर चौकार षटकार अगदी सहज येतले. खेळ सरलो 3 ओव्हरींचो 8 धावांचा करंट रन रेट, रिक्वायर्ड मात्र 17.60, रवले बॉल 30, करूचे असत 88. रेडी बॉलिंग मार्कवर महाराष्ट्राच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या वेंगुर्ला तालुक्यातल्या रेडी विघ्नहर्ता गणपती गजाननाचो 50वा वाढदिवस येत्या 18 तारखेक असा. तुमका सगळ्यांका आग्रहाचं निमंत्रण. त्याच रेडी गावचो ह्यो खेळाडू ग्लेन फर्नांडिस बॉलिंग मार्कवर 3 ओव्हरी सरले, रन झाले 24. अनुप माजालीकर स्ट्रायकर आणि जरीचेन ज्याने 1 बॉल मध्ये 1 रन नुकतोच केलो. पहिलो बॉल ताकदवान फटको, रिव्हर्स पुल, चेंडू सीमा पार, डायरेक्ट चंद्रार, बेतकर ट्रॉफी षटकार. पटू आपण कौतुक करू होतो अनुप माजालीकरचा. त्या कौतुकाक साजेसो फटको स्विच केलेलो षटकाराचो. ग्लेनचा स्वागत या षटकाराने त्यांनी केलं आणि त्यानंतर अलॉंग विथ कार्पेट ऑन ड्राईव्ह मिडॉनच्या दिशेने जोपर्यंत बबल येता फील्ड करता एक सिंगल या बॉलवर स्ट्राईक रोटेट. बऱ्याच कालावधीनंतर दिनेश परत या स्ट्राईकवर 3 बॉल मध्ये त्यांनी केले 3 रन. टप्प पडलो, चेंडू बाहेरच्या दिशेने वळलेलो. डॉट बॉल अजून एक. 3 बॉल सरले आणि ग्लेनने या 3 बॉल मध्ये खर्च केले 7 रन. एक सिक्सर जो होतो अनुपचो, 1 बॉल डॉट असा, एक सिंगल, अजून एक डॉट. यष्ट्यांच्या मागे गोपाळ भट्टाचा यष्टी रक्षण बघा. अजूनही युवा खेळाडूंका लाजवीत असे रिफ्लेक्शन त्याचे असत. नंबर 7 ची जर्सी, भारतीय संघाच्या सगळ्यात यशस्वी विकेट किपर कॅप्टनची ही जर्सी क्रमांक आणि त्या जर्सी क्रमांकाची अगदी सगळी इज्जत सध्या तरी गोपाळने राखलेली. 31 धावफलक असा, 112 चा पाठलाग. अजून एक डॉट बॉल. समीर वेंगुर्लेकरने अख्खी ओव्हर मेडन टाकली आणि त्यानंतर ग्लेन या ओव्हरचो 3रो डॉट बॉल. चौथ्या ओव्हरचो शेवटचा बॉल. आडवी बॅट, पसलेलो पटको, फ्रस्ट्रेशन शॉट, मिड ऑफच्या दिशेने फिल्डर चेंडूच्या खाली. गौरव गडेकरच्या सेफ हँड्स मध्ये येऊन पडलो बॉल. खेळ संपलो दिनेशचो. 4 ओव्हरीची समाप्ती, रन झाले 31.
हरीश काकोडकर सर, आपण कॉमेंट्री बॉक्समध्ये यावं. 4 षटकांचा खेळ संपलाय. 5व्या षटकाची सुरुवात झाली. सिंगल, धावसंख्या झाली 32 आणि कॉमेंट्री बॉक्समध्ये बदल ऐकू आवाज हरीश काकोडकर सर. Just getting the singles at the moment when they should be looking to get sixes and boundaries. But bowling has been really good. Vicky Boyer, a little expensive in the first over, but has got the things back in control. Oh, what a ball. What a delivery. Back of length, risen from the spot and just going next to the neck height. Trying to play a pull shot, but I think he was beaten by the length, beaten by the pace, by an extraordinary, extra effort ball here from Vicky Boyer. Really impressive. Yeah, 1 for the over, the signal coming from the officiating umpire. Superb. After bowling that magnificent bouncer, he comes up with a slower off-cutter. Batter was not ready. There's high skills here, absolute high skills. And that's the experience that you gain after playing some of the big events. They understand how to set up a wicket, how to set up a batter. Putting in the hard yard at the moment. Ah, got him there. Castled his thumb. The timber is broken. It's gone for a toss and Vicky Boyer has struck his first wicket. His 4 down Prestige 11 Salsett. Vicky Boyer at the moment taking the charge in the middle. Yorker, high on pace and high on performance in this particular over. He's teaming in, showing there is still some gas left him in spite of coming in. This might be just his 4th over in this competition. So a lot of energy is required to be preserved. A lot of energy is required. Fitness levels are very important when you are playing on a trot. If they win here, they will have to face one more game. Another one just could have been caught and ball chance, but just away from the fielder. Exceptionally good over here from Vicky Boyer. He saw what talent he has in this over when he charged out and charged really in and played in the minds of the batters. We are done with 5 overs, 34 for 4. Just the 3 runs in this over from Vicky Boyer and taken an important wicket of Angelo. Looking to heave the ball on the leg side. The high at the moment. When you are in control of the things, you have to just bowl in the right areas. Not any much pressure on the bowlers at this stage. When you have picked up 4 top order batters, asking run rate has climbed up drastically to 27. And the bowlers are bowling well and the balls are also going straight in the hands. Bubble Naik taking one more catch. I think the way he has been taking those catches so easily with a different style of his own and has not dropped a simple catch. It was a loosener, it was a full toss, should have been smoked out of the park. They are not middling the ball at all. That shows the lack of confidence, that shows which team is at the stage dominating this game. 34 for 5, Prestige 11 Salsett. They need to show some prestige here. Prestige 11. The asking run rate is moving up and up.
Vara, then he goes. He comes and walks back straight away. Trying to go for the switch hit, very first ball. It was a full toss. He went too hard with his flashy hands and has missed the line altogether. Ball crashing onto the off stump. 6 wickets down and is going too fast here. Down for Prestige 11 Salsit. They are going in a jiffy here. Once you lose 2 games, you are definitely going to go out of the competition. One team certainly watching all these games is to be HYS Warriors Pernem, who have marked their entry into the quarterfinals. So another game will be left. That is the winners of this one and the winners of game number 2, that is Shritesh 11, that will be up next after this one. On a hat-trick here, played inside out, well timed, the fielder is giving the chase. Babal Naik, he's crashed into the holdings there. He's crashed into the LED fence. I hope he's all right. It's not easy. I'm telling you, it's not easy. This is a ground where it is a quick outfield. And when you are running quickly and you are having a look at the ball, you just need to, you think I have to stop that boundary. And you don't get control of the footings and you charge out. So it sometimes can be dangerous. Trying to put in that extra effort. You need to preserve your energy as well for the next game. It should be another one. Bowler saying it is mine. He's going there and taken it very nicely. It was never easy. The batter went for the sweep shot, trying to take that gap into the square leg region. Got the leading edge. The bowler had to see, and also one eye on the ball as well as one eye on the call of that mid-wicket region fielder. He does both of them beautifully and holds it nicely. We have seen some drop chances in this game, but I think this was a wonderful catch. This is not the scorecard that you want to see. Going for the square cut and gets away for a boundary. Nicely put away off the back foot, crashing onto the offside in the point cover region. Excellent shot, but looking like it's coming all late in the day here for the team of Prestige 11 Salsit. We are done with 6 overs, 42 for 7. Just the 8 runs coming off this over. But having spoken about this game, the Herculean task, and it's a big uphill task for this team. It's just gone out of the hands. They've not got the start, they've not got the momentum at all in this run chase. I think the fielding should have been better. They should have taken those catches when it came their way. Drop chances in the first 2-3 overs and of the better batters. Once you drop chances of good batters, you always finding yourself chasing a big one. And that's the mistake, that's the error that it has been there from Prestige 11 Salsit side. Once you are losing 2 games, you're certainly not having the third chance. And that is where Rajaram Warriors, Vengula Talavne has done an incredible job. They're bowling in the right areas, the batters doing a good job, especially in the floodlight games. Anything around 100 plus might not be that easy. We have seen a defense of 94, 95 runs from HYS Warriors against a strong side of Shritesh 11 Sattari. That itself indicates that night matches, it might not be as high scoring as the day ones. Another one, but falls safely. Getting maybe the bottom part of the bat, trying to just go for the inside off shot, slightly away from the reach, played away from the body without moving that back leg. That's why you see that strong shot in the covers region, which gives strike to Naresh Sosolekar. Perfect Yorker. Perfect Yorker. Good length, good pace. Samir Vengulkar after the back of his maiden over. It's a rare entity when you are seeing maiden over in tennis ball cricket. It's a remarkable feat. You never witness such performances often in your career.
And that's why Samir Vengulekar should be applauded. And it's in the power play overs as well, especially against the top order batters. Such a outstanding achievement. We don't see maiden overs often. Samir will be with high on confidence going into the next game. This match is done and dusted. Nothing left in this game. Absolute brutal domination. Short ball, but it was a leg cutter. Should be taken down in the deep corner region. Yes, it is. He bowled that a slower one, slightly dragged back this length, but he bowled that sharp leg cutter. He turned away from the batter, little bit of extra bounce, trying to go for the short arm jab pull shot, got it high on the bat and taken nicely by the fielder in the deep. Another one perishes, 45 for 8, Prestige 11 Salsette. The next few balls here in this game number 4. Losers of first game, both of these teams had an opportunity here to perform much better. Prestige 11 Salsette. It's not that they don't have the team. It's just that sometimes it might not be your day. They've not lived up to the reputation, so they have not batted or bowled as well they would have liked. I think certainly 1 point fielding should have been much more better here in this game. That was a stark difference between both the teams. That's another one. It's a catch. Bubble has not dropped any catch today and he will not drop that as well. He has been outstanding at the long on region and also when he has been asked to do the job in that mid-wicket region. Exceptionally good fielder. Strong hands, safe hands. He pouches another one. And Chikalgi Gurushant Mendes has departed. In fact, he has a है बहुत ही एक तरफा मुकाबला पूरा डोमिनेट किया है इस मुकाबले में यहाँ पे राजाराम वॉरियर्स तलवने वेंगुल्ला और इस जीत के बाद मनोबल काफी ऊंचा होगा अगले मुकाबले के लिए क्योंकि इसके बाद और एक मुकाबला उनका बाकी अच्छा शॉट यहाँ पे डाउन द ग्राउंड इफ यू सी दे हैव टू प्ले 3 games in a row. They have to win this one, they have to win the next one, and they have to play the quarterfinals. That's why it's always important and imperative to win 2 games here in a format like this one and sitting pretty in the quarterfinals. Your players will get a little bit of time as well. And should have been taken in a better way here this game. There's play and a miss here. It's not going to be easy for the number 9, number 10, number 11. And the top order has absolute collapsed here. At the back of facing a big run chase. But it has never got, they've not got started at all. Right from the first over. There were a couple of hits here, there, and that's all over. And they have given it up, and given it easily. They understand that the match is done and dusted and nothing left. No steam, an absolute commendable performance. Dominating right from the word go. Apart from some lapses in the fielding from Prestige 11 Salsette, you cannot say there was a moment here for this team to dominate. This Rajaram Warriors, Vengula Thalavane has made it into the next round to lock horns against Srutesh 11 Sattari. That's coming up next. This will be high on performance. Most of the batters chipped in with a good performance here with the bat.
and posted a big total, especially under lights. You can call it as a good total. And coming and bowling very, very economically, not given anything easily for the batters to score runs. And शानदार प्रदर्शन यहाँ पे राजाराम वॉरियर्स तलवने वेंगुल्ला, और इस जीत के बाद उनका जो बैटिंग और बॉलिंग जिस तरीके से उनको कंपोजिशन चाहिए वो यहाँ पे जरूर दिखेगी, और एक अच्छे मनोबल के साथ यहाँ पे अगले मुकाबले में जरूर अपने आप को पेश करेंगे श्रुतेश 11 के खिलाफ। हालांकि इससे पहला मुकाबला जो फर्स्ट राउंड का मुकाबला था, श्रुतेश 11 ने उनको परास्त किया था 8 रन के मार्जिन से, और इस बार वो जरूर अपना बदला लेना चाहेंगे इस अगले मुकाबले में। वही मुकाबला दोबारा हमको देखने को मिलेगा